أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I welcome you all in our today's online session, lecture number 3 of instrumentation and measurement. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the words of Holy Quran. In today's session of lecture number 2, we start about further in several criteria for classification of instruments. Instruments are characterized or can be chosen by the several criteria in which the most important aspects out of 5 are represented in the form of the active and passive instruments, null type and deflection type instruments, analog and digital instruments, indicating instruments, and instruments with a signal output. And the last one is uh, smart and non-smart instruments. Further, we talking about the active and passive instruments. These are the other mechanical and electrical types of instrument which mainly use in many applications and as per the need. So we first talking about the active instruments. The quantity being measured simply modulates the magnitude of some external output. अब हम अगर एक्टिव इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो क्वांटिटीज जो कि इन इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से मेजर्ड की जाती है, जिसकी पैमाइश की जाती है, ऐसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स मैग्नीट्यूड बेस्ड मेजरमेंट के लिहाज से और वो एक्सटर्नल पावर सोर्स से काम करते हैं, उन्हें एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। द एक्सटर्नल पावर सोर्स इज यूजुअली इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म और मेनली इसमें बैटरी कनेक्ट होती है या किसी ना किसी अडेप्टर पावर सप्लाई के जरिए से वो एनर्जाइज होता है। But in some cases, it can be other forms of energy, such as the pneumatic and the hydraulic one. Further, active instruments are the measurement of resolution may be improved by the adjustment of magnitude of external energy input. This magnitude has limitations in consideration of heating effects and for safety concern as well. More costly than the passive instruments, and uh, construction is not as simple as passive. So these are self-explanatory statements which are can be understood. Further, these are the petrol tank level indicator. Petrol tank level indicator are like the filling of petrol can be uh, placed on the surface. You can see it's a floating point which float on the particularly on the surface of that particular medium of petrol, and the variation of that scale can be high and low as per its the requirement, and this scenario is measured by the energization of the battery. Output can be measured in the form of analog needle deflection in the output voltage as well as the needle based deflection on the meter scale. Further, we coming towards the passive instruments. The output of instrument is entirely produced by quantity being measured. If you're talking about the passive instrument gauge, so you can see that it's an isolated system in which a fluid of liquid can be filled and can be pressed by a piston connected with the spring, and that particular shaft of that spring connected to the piston is coupled with the pivot with a pointer of needle scale deflection. The variation in the vertically
upside and movement downward side, the direction of the scale can be reflected by the scale deflection in this way. So this sensing cannot require electrically formation of the battery. Electrical battery cannot be provided for these measurement scenarios. So this is the basic passive instruments we can see in this type of diagram. Further, the passive instruments you can see with the help of pressure gauge shown in the movement of resolution can be increased by making a pointer longer, as जैसे कि हम इसको पहले भी देख चुके हैं उसमें, such that the pointer tip moves through the longer, जो कि डिफ्लेक्ट कर रहा होता है हमारे सामने. The length of pointer might be increased for better measurement resolution, but restricted by practical limits of how long the pointer conventionally be. Simpler construction and cheaper to manufacture. So it's not a complicated and complex type of instrument. It can be measured in the simplest way as well. So coming towards the verses of active and passive instruments, which are the choice between the active and passive elements for a particular application involves carefully balancing measurement resolution versus cost. ये हम जानते हैं कि एक्टिव इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो कॉस्ट के लिहाज से, रेजोल्यूशन के लिहाज से ज़्यादा बेहतर होंगे, जबकि पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये एक्यूरेसी कम से कम हमें मिलेगी. और हम ये भी जानते हैं कि जो आपके पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें इलेक्ट्रिकली सेंसिंग के लिए एक्सटर्नली सप्लाई रिक्वायर्ड नहीं होगी, बैटरी की नीड नहीं होगी, और उसकी सेंसिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल आउटपुट के वो आपको रीडिंग प्रोवाइड कर देगा. और पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके इस तरह के, ये सिंपल हैं बनिस्बत इस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के. Further, coming towards the second category of instruments, which are the null type and deflection type of instruments. So null type instruments are, you can see that the balancing based phenomena can be reflected and shown by a center point of 0. So if in this diagram, if both the two sides of arms of that balancer is in equal position at the state of 0, then it shows the zero base needle deflection. The value of quantity being measured is made in terms of value of the weights need to reach a null position. A schematic diagram of an equal arm beam of balance can be seen in this form. इसमें अगर आप देखें तो दोनों साइड का के जो पलड़े हैं ये बैलेंसिंग पोजीशन पे तब होंगे जब इस इनके दरमियान का जो ये डिफ्लेक्शन है, नीडल है, ये 0 पोजीशन पे आ रही होगी. और अगर किसी जानिब अगर वजन ज्यादा या कम हो रहा होगा तो उसकी तरफ ये चीज मूव कर जाएगी, यानी उसका वजन जहां ज्यादा होगा वहां पर नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी. और उसके नतीजे में अपोजिट डायरेक्शन मूव कर जाएगी, और उसके नतीजे में ये जो नल पॉइंट है उससे वो डाइवर्ट कर जाएगी. और अगर इनके दरमियान जो बैलेंसिंग फुलफिल हो जाती है तो उसमें हम अपना नल पॉइंट फाइंड आउट कर पाएंगे, और इसके नतीजे में हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमारी जो बैलेंसिंग है वो फुलफिल हो रही है बिकॉज ऑफ नीडल वी कैन फाउंड बाय द नल पोजिशन. Further, null type of instrument. See another example here is the weights are put on the top of piston until the downward force balance. The fluid pressure weights are added until the piston reaches a random level known as null point. So the dead weight pressure gauge, it looks like in this form in which the liquid is filled by a piston of pressure and we apply some kind of weight on it. The random level is, we can fulfill that, the scale of that if we reach, then the null would be fulfilled. And if the weight is applied on the higher side, then that random level would be deviate, then cannot be fulfill the balance position. Then we can say that the null instruments cannot, null instrument can provide the balance output, and we can conclude it provides a deflection in sense of null position. So it depends upon the calibration of weights.
अब जो इसके ऊपर हम वजन रख रहे होते हैं, औजान इसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, उसकी कैलिब्रेशन बहुत मैटर करती है कि आप वेट कितना अप्लाई कर रहे हैं उसको बैलेंस पोजीशन में लाने के लिए। क्योंकि पिस्टन बाज दफा मीडियम के वजह से वो मूव भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि मीडियम जो है ये लिक्विड का हो, ये गैस का भी हो सकता है। और उसके प्रेशर को फुलफिल करने के लिए, एक आइसोलेटेड सिस्टम मेंटेन करने के लिए, हमें वो नल नीडल डिफ्लेक्शन अगर फुलफिल करना है तो उसके ऊपर उस लिहाज से वेट अप्लाई करेंगे। So it needs a calibration, and for that reason we applied weight on its surface. It is more accurate because weight calibration is easier than calibration of a linear characteristic spring. For calibration, null type instruments are preferred because of their superior accuracy। और ये हम यूज करने का बेसिक पर्पस यही होता है कि इससे लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्रिंग हासिल होती है और सुपीरियर एक्यूरेसी इससे हासिल होती है। दैट्स द रीजन वी मोर प्रेफर द null type deflection instruments। Not convenient to add and subtract weight until null point is reached. This is another way of explanation of null type deflection. So coming towards the deflection type of instruments, the value of quantity being measured in the display as in on the screen of meter in terms of the amount of movement of a pointer. So this type of instrument can be fulfilled by the deflection type. So the same example of which we covered in our passive. So it's a self-explanatory uh, figure that medium of the liquid can be applied pressure by the spring, and the movement of that spring shaft can be fulfilled by the varying of its value and the position of a spring, and deflection can be seen on the screen of a scale which can it reflects on meter. So the consequences and the reasons why we prefer it depends upon the linearity and calibration of the spring. So ये दोनों काम करते हैं, linearity and calibration। linearity कैसे? linear हम इंस्ट्रूमेंट्स या सिस्टम हम उन्हें कहते हैं जिनके ऊपर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं और जितनी अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन और उतनी ही फोर्स या आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हो रहा हो, तो ऐसे टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को लीनियर इंस्ट्रूमेंट्स, लीनियर फिनोमेना कहते हैं। और कैलिब्रेशन तो ये है कि हम सेट पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हासिल करने के लिए उसे फुलफिल यूजर रिक्वायरमेंट को करते हैं, तो उसे कैलिब्रेशन ऑफ द स्प्रिंग कहते हैं। और स्प्रिंग की कैलिब्रेशन हम इससे फुलफिल करते हैं कि कितनी वेरिएशन ऑफ मीडियम आपने अप्लाई करनी है, अ, उससे स्प्रिंग की डिफ्लेक्शन रिलेट करती है पॉइंटर ऑफ द स्क्रीन मीटर के साथ। मोर कन्वीनियंट and are used more than null type instruments because it is far simpler to read the position of a pointer against a scale। अच्छा, अब ये जो ये लीनियर बिहेव किस तरह कर रही होती है कि मिसाल के तौर पे हमारा किसी न किसी तरीके से अगर ये पोजीशन लिक्विड की बढ़ जाती है, अब मिसाल के तौर पे खुद ब खुद ही पढ़ने का रीजन क्या है या इसमें प्रेशर बढ़ाने का, कि हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं अगर, तो जो पोजीशन होगी उसके पिस्टन की वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। और जब वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी तो स्प्रिंग आपका श्रिंक होगा और उसके नतीजे में लेवल जो है वो भी आपका मूव करेगा। तो ये बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर और वी कैन गेट द प्रेशर, देन द स्केल ऑफ डिफ्लेक्शन कैन बी मूव linearly as we apply a temperature or a pressure on a linear way। सो एनालॉग वर्सेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये हमारे सामने ही है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि डिजिटल फॉर्म में, डिजिट की फॉर्म में हमें आउटपुट दे रहे होते हैं, इन्हें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। और जो नीडल डिफ्लेक्शन बेस्ड आउटपुट हमें दे रहे होते हैं ऐसे इन्हें एनालॉग मीटर्स कहा जाता है। कन्वेंशनली इन दोनों के मवाजने में इन दोनों के एक्सप्लेनेशन में मवाजना करने में बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क है एवोल्यूशन का, एक्सप्लेनेशन का और रीडिंग हासिल करने का। ये जो सिस्टम ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये हमें एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करते हैं और मैग्नीट्यूड के मुताबिक उसको रीड करना और कंक्लूजन इससे हासिल करना ज़्यादा आसान है। जबकि डिफ्लेक्शन एनालॉग बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका आउटपुट बहुत कन्वीनियंट नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता और उसको जज करना काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है।
Further features of analog instruments are an analog instrument give an output that varies continuously as quantity being measured changes. तो एनालॉग मीटर्स के अंदर या इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो आउटपुट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहे होते हैं, उनमें जो वेरिएशन रहती है आउटपुट की, ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। द आउटपुट कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, और इसके नतीजे में हमें जो वैल्यूज रिजल्ट की अखज हो रही होती है वो भी इनफाइनाइट हो जाती हैं विद इन द रेंज दैट द इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन टू द मेजर्ड। अब एक इंस्ट्रूमेंट अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिजाइन हुआ हुआ है तो उसके नतीजे में जो वेरिएशन होगी वो रेंज से बाज़ औक़ात हट भी जाती है। तो ये जो डेविएशन है, तब्दीली है, ये बहुत ज़्यादा एरर का बाइस बन जाती है। दैट्स अ रीजन, इट्स एन सेकंड disadvantage of analog instrument. As an input value changes, the pointer moves with the smooth continuous motion. और जिस हिसाब से इनपुट वैल्यूज तब्दील हो रही होती हैं तो आउटपुट की वैल्यू भी उसके मुताबिक कंटिन्यूसली मोशन में रहती हैं। ठीक, मिसाल के तौर पे अगर हम एक वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं या फिर थर्मोकपल से आउटपुट ले रहे हैं, तो थर्मोकपल की जो आउटपुट है वो टेम्परेचर सेंसर पे अप्लाई करने के नतीजे में मिलती है। अगर ये दोनों वायर्स एक थर्मोकपल की, जो कि हमें डिसेबल मेटल से मिलकर एक थर्मोकपल बनता है, और ये प्रोवाइड कर दें हम एनालॉग मीटर को, तो हमारे टेम्परेचर की वेरिएशन जो आ रही होगी इसका इम्पैक्ट हमें उसके नील डिफ्लेक्शन में कंटिन्यूसली वेरिएशन के नतीजे में मिलेगी, और उसको रेंज वाइज काउंट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। दैट्स अ रीजन particularly and for that particular drawback we need to more prefer to use digital instrument because it provide the output in some kind of range variation can be feasible to measure and sense. Further, analog to digital converters are required to interface analog instruments to microcomputers. Further, analog to digital converters required होते हैं क्योंकि अब इसका हल क्या है, इन वेरिएशंस को, रेंज को काउंट करना और इसकी एक्यूरेसी को अनएक्यूरेट वे से एक्यूरेट वे में अगर रीड आउट करना है, तो जो भी आपको एनालॉग आउटपुट मिल रहा है इसे आप डिजिटल में कन्वर्ट कर लें। दैट इज कॉल्ड ए टू डी कन्वर्टर। इसके जरिए से जब आप कन्वर्ट उसे करेंगे तो उसके नतीजे में इंस्ट्रूमेंट्स का आउटपुट आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, जो कि किसी माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि फर्दर उसकी रेजोल्यूशन करके डिजिटल फॉर्मेशन करे और आपको डिजिटल आउटपुट से मिले जो कि यूजर फ्रेंडली होता है। After that, analog to digital converters add significant cost to the system, और इसके नतीजे में एक कॉस्ट होती है जो इसकी कन्वर्जन की आपको बेयर करनी होती है उसके कन्वर्टर के अंदर, या इसको इस तरह कह लें कि हम जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं उसके अंदर एनालॉग टू डिजिटल वैसे ही बिल्ट इन होता है, तो आप कॉस्ट बेयर कर ही रहे होते हैं ऑब्वियसली। Analog to digital conversion requires time, which can be critical in the control of fast processors as well. So this and another future aspect of analog instrument for the kind of evolution as well. Now further you moving towards the another concept of digital instruments. A digital instrument has an output that varies in uh, discrete steps and so can only have a finite number of values as well. So इसके जो वैल्यूज होती हैं वो काउंटेबल होती हैं इंटरवल के लिहाज से, और नंबर ऑफ वैल्यूज को जब वो काउंटेबल होती हैं, रेजोल्यूशन उसकी एक्यूरेट होती है, तो इसके नतीजे में मेमोरी एलोकेशन काफ़ी हद तक कम होती है और सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता फॉर दी स्टोरेज एंड रिकॉर्डिंग पर्पस, डिस्प्ले पर्पस, प्रोसेसिंग पर्पस के लिहाज से भी। It can be interfaced directly to microcomputer. As an example, ये एक अनवेयर्ड सरफेस है जिसके मूवमेंट के नतीजे में आपका जो स्विच है वो कंटिन्यूसली क्लिक कर रहा होगा, और जितनी मर्तबा वो क्लिक करेगा काउंटर उतनी मर्तबा उसे काउंट करेगा डिजिट की फॉर्म में या बार के लिहाज से। तो वो काउंट आपको अंदाजा होगा कितनी मरतबा, अच्छा ये काउंट जो है ये काउंटेबल होगा कि कितनी मरतबा ये अपना एक रेजोल्यूशन मुकम्मल कर चुका है क्लॉक वाइज के लिहाज से। तो इसके नतीजे में आप ये बता पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ रेजोल्यूशन कवर कर चुका है और ये काउंटर की फॉर्म में डिजिट आ रहे होंगे। तो ये एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। फर्दर इन द फिगर द गेम ऑफ पर्टिकुलर अनबर्ड सरफेस that is attached to a resolution of body, the object is open and closes a switch on the
रेवोल्यूशन, हर एक चक्कर के नतीजे में उसका स्विच ओपन और क्लोज होगा यानी क्लिक होगा। The switching operations are countered by an electronic counter, sorry. The system can't discriminate any motion, और जो सिस्टम है वो किसी मोशन को फर्क नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो तो स्विच ले रहा होगा कि आया इसकी जो क्लिकिंग हुई है इसके नतीजे में कितना काउंट कंटिन्यू हो रहा है। तो ये काउंट कंटिन्यू होने के नतीजे में वो डिजिट की फॉर्म में, डिजिटल की फॉर्म में आउटपुट हमें दे रहा होगा। एनी मोशन एंड फर्दर लेस देन अ फुल रेवोल्यूशन, indicating instruments and instrument with a single output. So kind of instruments which can provide the indication and as well as the single output. Indicating instrument are merely gives an audio or visual indication of magnitude of a physical quantity being measured. तो ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइस होते हैं जो कि इत्तला देते हैं किसी लाइट की सूरत में, किसी हॉर्न की सूरत में, किसी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फिनोमेना की सूरत में कि आउटपुट अपेयर हो रहा है, आउटपुट अकर हो रहा है। इट इंक्लूड्स ऑल नल टाइप एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स। इट कैन बी आइदर एनालॉग, liquid and gas thermometer, and as well as in digital numbers of presented on electronic display. इंस्ट्रूमेंट विद अ सिंगल आउटपुट की अगर हम बात करें तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं? इंस्ट्रूमेंट दैट गिव एन आउटपुट in the form of a measurement signal whose magnitude is proportional to the measured quantity, commonly used as a part of automatic control system. So measurement system signals are the electrical signal, usually electrical current, optical signals, and the pneumatic signals. So these are the single output which instrument can provide or measure. Further, we coming towards the next category of the instrument, which are the smart and non-smart instruments. इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो इससे अंदाजा होगा कि जिस तरह से ये क्लैम मीटर है और उसके फीचर हैं बहुत सारे, जिसमें ये एक डीसी मीटर को, डीसी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज, डेटा को, फर्दर फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस ऑफ फैराड, resistance in hertz, continuity and the diode operation, and further the temperature and the non-constant voltage can be measured by the single-ended instrument by selecting the quantity uh, by the clamp as well as the potential of this meter as well. अब साथ ही साथ ये एक नॉन स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट है, बट द स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम इस बॉटम वाली फिगर को देखें तो इससे हमें अंदाजा होता है कि ये वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए से अपने रेस्पॉन्सेज एक पर्टिकुलर ऐप या क्लाउड को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लॉगिंग एंड रिकॉर्डिंग के एस्पेक्ट से इसको फुलफिल करे। तो वो कैटेगरी जो आईओटी, नॉन आईओटी बेस्ड डेटा लॉगिंग करते हैं, उस रिक्वायरमेंट को वो इंस्ट्रूमेंट्स अगर फुल करते हैं तो इन डिवाइसेस को, इंस्ट्रूमेंट्स को स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। सो तस्वीरों से काफी हद तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बट फर्दर इसके डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन पे हम बात करते हैं। सो this would be the last slide of today's session and presentation as well. So coming towards the smart instruments that incorporate with microprocessor. So microprocessor as well, but अगर हम आज के evolution of technology की बात करें और यूजर फ्रेंडली environment की बात करें और एज वेल एज डेटा अप्रोच की बात करें तो वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं वायरलेसली ब्लूटूथ के जरिए से, जिसको हम कहीं डेटा स्टोरेज पर्पस के लिए, डेटा लॉगिंग के पर्पस के लिए, या शिफ्ट्स का जो डेटा आ रहा होता है इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से, उसे कहीं एक किसी प्लेटफॉर्म पे, क्लाउड पे अगर कलेक्ट करें तो वो इंस्ट्रूमेंट्स मेनली हमारे स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। और किसी न किसी एक स्टोरेज के जरिए से भी हमें स्टोरेज डिवाइस वहाँ कनेक्ट करनी पड़ती है ताकि हमारा वो एक रिकॉर्ड डेटा वहाँ पे कलेक्ट हो और वक्त पड़ने पर हम उसका ऑडिट और उसे किसी यूजेबल एस्पेक्ट में इस्तेमाल कर सकें। तो उन मकसद के लिए स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। But the next category of the instrument are the non-smart instruments that do not incorporate microprocessor as well. But मैं इसके बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि non-smart instruments वो होते हैं जिसमें हमें
जो रिस्पॉन्सेज हैं वो वायरलेसली रिसीव नहीं हो रहा होता ब्लूटूथ के जरिए या वाईफाई टेक्नोलॉजी के जरिए से। इसके डेटा को हम कहीं स्टोर भी नहीं करते, बस रियल टाइम में डेटा डिजिटल की फॉर्म में आ रहा होता है या एनालॉग की फॉर्म में आ रहा होता है, और हम इस डेटा को जस्ट इंडिकेटिंग पर्पस के लिए, फिजिकली एस्पेक्ट रीड आउट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये रिक्वायरमेंट इस तरीके से हमारी फुलफिल हो जाती है। तो बेसिकली स्मार्ट एंड नॉन स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन्हें कहा जाता है। सो होपफुली यू you get the lot of information regarding the type of instruments in today's session. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप सब में लगा दूंगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज।